Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. I hope you all are fit and fine. So after completing a little bit introduction about this chapter, today we are going to start with a short summary of this chapter. The name of the chapter is The Little Girl by Catherine Mansfield. So here we do have the first paragraph. Kezia is afraid of her father. केजिया अपने फादर से बहुत डरती थी. The little girl Kezia was afraid of her father. वो अपने पापा से इतना डरती थी, बहुत ज्यादा डरती थी. And she always wanted to avoid meeting him. Really, it was a fact that being a daughter, but the same thing is with the Kezia that she always avoid his father. She didn't want to meet him as she felt that her father was very cruel by his nature. So she felt relieved, she felt very relaxed when he went out from the house at the for the office. जब वो ऑफिस के लिए जाया करते थे ना, तो दैट टाइम शी फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड. उसको बहुत रिलैक्स महसूस होता था. श्योर, वेरी गुड कि वो चले गए. व्हाई इज इट सो? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों था ऐसा? As we already discussed in our introduction part, that she felt relieved. Why she felt relieved? What was the reason? So, because his presence made him uncomfortable. क्योंकि जो उसके फादर की प्रेजेंस थी ना, उसके फादर का वहां पर प्रेजेंट होना उसके आसपास उसको बहुत अनकंफर्टेबल अनईजी सा फील कराता. एंड इट वाज अ फैक्ट दैट she didn't want to she didn't want to spend time with his father. So she used to talk normally, but when she talked with her father na, she started stutter. वो क्या करती थी? हकलाना स्टार्ट कर देती. बाकी किसी के साथ बात करते हुए उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती थी. But when she talked with his father, she started doing it. उसको स्टैमरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती थी. In front of her father only. He appeared so big to Kezia that she would compare him with a giant. वो कहती है Kezia, according to her, her father's personality was just like a giant. It was fact that she would compare him with a giant. वो उसको एक राक्षस एक दानव की तरह जो है ना अपने फादर को समझती थी. Kezia's grandmother wanted, उसकी दादी ये चाहती थी that Kezia should talk to her parents more, and therefore on Sunday afternoons उसकी दादी चाहती थी कि वो अपने फादर के साथ अपने पेरेंट्स के साथ बैठे उनसे बातचीत करे. तभी तो वो खुल पाएगी ना अपने पेरेंट्स से बात करते हुए. सो इसलिए एवरी संडे आफ्टरनून her grandmother asked to Kezia that she would send her, कि वो उसको भेज दिया करती थी, तो ड्राइंग रूम में to talk to them, उनसे बात करने के लिए, where they would be relaxing, जहाँ पर वो रिलैक्स कर रहे होते थे.
तो जहाँ पर उसके फादर और मदर इकट्ठे होते थे ना, तो वहां पर वो हमेशा क्या करती थी, उसकी दादी जो थी ना, वो उसको केजिया को भी भेज देती थी कि जाओ अपने फादर के साथ मदर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उनसे बातचीत करो। बट एज वी ऑलरेडी डिस्कस, she was not in a good feeling when she was with his father. What had happened? What was the actual situation? That why Kezia felt that? So Kezia makes a birthday gift for her father. केसिया एक बार अपने पापा के लिए उनका एक बर्थडे गिफ्ट बनाती है। So when one day Kezia had a cold, केसिया को कोल्ड था, and she did not go to school. वो स्कूल भी नहीं गई। Her grandmother suggested her to, उसकी ग्रैंडमदर ने उसको सजेस्ट किया, उसको थोड़ी सी एडवाइस दी, to make with her own hands a pin cushion as a birthday gift for father. वो अपने पापा के लिए अपने हाथों से कुछ बनाए। वेरी नाइस थॉट, बिकॉज हर ग्रैंडमदर सजेस्टेड हर टू मेक, क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर ने सजेस्ट किया था। हुज बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, जिनका बर्थडे अगले ही हफ्ते था। सो केजिया स्टिच्ड थ्री साइड्स ऑफ इट। अब केजिया ने थ्री साइड्स जो थी वो तो सील दी पिन कुशन की। नाउ शी वांट्स टू fill something in that question so that she would be able to stitch the fourth upside. So then, not finding any scraps to fill it with, जब उसको कोई भी scrap जो है वो नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, she filled it by tearing into small pieces. उसने क्या किया, उनको small pieces में करना स्टार्ट कर दिया। स्मॉल पीसेस में कुछ उसको मतलब है ना, पेपर्स लिए उसने जो उसको उसकी मदर के रूम में से मिले थे, मदर के बेडरूम से मिले। तो उसने स्टार्ट कर दिया उनको टीयर करना, टू स्टफ इन द पिन कुशन। दैट्स ग्रेट। देन शी कंप्लीटेड द पिन कुशन बाय स्विंग इट्स फोर्थ साइड। अब उसने तो कर दिया स्टार्ट। क्या स्टार्ट कर दिया? फोर्थ साइड को सीलना, क्योंकि वो स्टफ्ड कर चुकी थी, उसको जो चाहिए था उसको मिल चुका था। अब उसको जो मिला तो उसने क्या किया? यस, उसने भी वही किया, उसको सील दिया, फोर्थ साइड को सील दिया। लेटर, बाद में, हर फादर वाज वेरी एंग्री। उसके पापा तो बहुत गुस्सा हो गए। व्हेन, कब गुस्सा हो गए? व्हेन ही कुड नॉट फाउंड, जब उसको मिले ही नहीं, द पेपर्स ऑन विच ही हैड रिटन द स्पीच, उसको वो नहीं मिले जो उसके फादर ने, जिन पेपर्स पे उसके फादर ने स्पीच लिखी हुई थी, वो उसके फादर को मिली ही नहीं। अब वो स्पीच दैट वाज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट वाज रिलेटेड टू द पोर्ट अथॉरिटी, नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे पोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग थी, एंड फॉर दैट मीटिंग शी हैड रिटन अ स्पीच. So obviously, it was a very big blunder, we can say that, and her father was very angry. When Kezia was asked, she told her father that she had torn up and stuffed the papers in the pin cushion she had made. जब केजिया से पूछा गया तो उसने बताया अपने पापा को, अपने फादर को उसने बताया कि उसने उन पेपर्स को फाड़ा है क्योंकि उसको पिन कुशन बनाने के लिए
कुछ पेपर्स की नीड थी। सो हर फादर पनिश्ड हर। अब उसके फादर ने क्या किया, उसको पनिश किया। उसको पनिश क्यों किया? उसको पनिश क्यों किया? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे। और अब वो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, तो अब वो इम्पोर्टेंट पेपर्स अगर होंगे जो उसके फादर को बहुत ज़रूरी चाहिए थे, तो उनको फ़ील तो होगा ना कि क्या कर दिया उसने। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पनिश्ड हर, उसको पनिश किया। विद हर हैंड, विद द रूलर, एक रूलर के साथ। अब रूलर यानी कि उसको स्केल लिया और उसको क्या किया, उसको लगाया स्टिक से, उसकी पिटाई की। नॉट टू टच, टू टीच हर, उसको ये सिखाने के लिए दैट नॉट टू टीच एनीथिंग, किसी चीज को हाथ नहीं लगाए, विच डिड नॉट बिलोंग टू हर, जिस चीज का कोई उससे लेना देना नहीं होता, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड बाय हर, so she did not belong to her, that thing was not belong to her, so she need not to touch anything. So it was a, sometimes our family, our parents felt the same because we do not know about each and everything's important. So that speech, which had torn by Kezia, maybe it's very urgent for her father, and when he got to know, he felt very bad that what had happened, कि ऐसा क्यों हुआ। सेम थिंग विद हिज फादर ऑल्सो, उनके साथ भी वही चीज हुई कि गलत हो गया भाई, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ओके, देन केजियाज नेबर द मैकडोनल्ड्स। अब अपने फादर से ना बहुत बुरी तरह से डर गई। सो नाउ शी कंपेयर्ड हिज फादर with his neighbor, Mr. McDonald. Kezia was jealous of the happy family living next door, Mr. McDonald. His wife, उसने एक बहुत बुरा सपना देखा। एक कसाई जो हाथ में चाकू लिए, उसके हाथ में रस्सी थी, वो एकदम से जाग गई और चिल्लाने लग गई। To find her father standing there, उसने देखा कि उसके फादर जो है वो उसके पास खड़े हैं। He took Kezia with her to his room. उन्होंने केजिया को उठाया, रूम तक ले गए एंड ले डाउन बिसाइड हर टू गिव हर कंफर्ट। उसके साथ लेट गए उसको कंफर्ट कराने के लिए। ही स्लेप्ट ऑफ ड्यू टू बीइंग टायर्ड। ही स्लेप्ट ऑफ, वो सो गए बिकॉज वो बहुत थके हुए थे। दैट इज व्हेन केजिया रियलाइज दैट ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड, उसको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड फेल्ट सॉरी, करना पड़ता है, मतलब नाउ she completely realized that कि if her father is not able to give the proper time, so it was not that her father didn't like her. It was when that he had to work very hard for me, for our family. So then she realized that he had to work very hard, na. So that's why she felt that her father always tired, and now she felt sorry for tearing up his papers. That it was really a big fault of Kezia only, that without knowing about the importance of paper, she tore the pages. So she told him that he had a very big hurt. So when she was sleeping, she was laying with her father, she hugged him very much tight, and then she said in the mind only, in the heart only, that really
his father, her father had a very big heart. So, what is the conclusion of the chapter? The little girl teaches us how a loving and caring relationship between parents and children can help in strengthening the bond and attachment in the family. Little girl जो हमें सिखाती है that how a loving and caring relationship, कैसे एक loving एक प्यारा सा और caring relationship between parents and between parents and children can help कर सकता है बच्चों की, parents की, in strengthening the bond and attachment in the family. कि अगर हम बच्चों के साथ बहुत लविंग और केयरिंग रिलेशनशिप रखते हैं ना, तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में ना एक ऐसा प्यार, एक ऐसा बॉन्ड और ऐसी अटैचमेंट बन जाती है ना, जो बच्चों को बहुत हौसला देती है. सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट इन अदर. तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे के अंदर फॉल्ट निकालने की बजाय ना, एक दूसरे को समझना चाहिए कि वो हमसे चाहता क्या है. So now we do have some questions. Given below are some emotions that Kezia felt. So we have to match the emotions. Fear or terror? First emotion, yes. तो उसको fear, डर कब महसूस होता था? When she was speaking to her father and when her father comes home. जब उसके जो टीचर्स सॉरी उसके जो फादर थे, जब वो घर आते थे और जब उसको अपने फादर से बात करनी होती. एंड ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ कब होती थी? यस, हाँ जी. ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ उसको कब महसूस होती थी? जब उसके फादर जो थे क्या करते थे? कहाँ चले जाते थे? गोइंग टू बेड व्हेन अलोन एट होम. ठीक है. एंड जब उसके फादर जो थे ऑफिस चले जाते थे, तब उसको फील होती थी. एंड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोज फेंटर, तब उसको फील होता था कंफर्टेबल, रिलीफ फील होता था. अब फनी फीलिंग परहैप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जब उसके फादर उसके रूम में आते थे उसको कैजुअल किस देते थे, या जब उसके फादर लेटे हुए होते थे स्नोरिंग एट द सोफा, एंड व्हेन फादर comforts her falls asleep. Okay, so these are the points. Now we do have the first question. Why was Kezia afraid of her father? क्यों डरती थी? Because he was extremely strict and commanding. Because her father was really a very strict and commanding in his personality. He never played with her. He didn't spend time with Kezia. He didn't talk with Kezia. He used to give her a terrible look over his spectacles. वो अपने चश्मों से एक भयानक सी नजर से हमेशा उसको देखा करते थे, केजिया को. And main thing was that he didn't talk with her. Her father was very strict, always and usually her father scolded her and always commanding her and never spent time with her, never played with her. So that's why she was completely afraid of her father. इतना डरती थी that in front of her father she used to stammer, हकलाना स्टार्ट कर देती, because of the fear from her father. So question number 2 we do have, who were the people in Kezia's family? Yeah, Kezia's family comprised, Kezia की family में कौन कौन थे? Her father, mother,
grandmother and Kezia herself with his cook. उसका एक with her cook, उनका एक cook भी था, एलिस, जो भी उनके साथ रहता था. As a servant, as a cook, we can say that. So question number 3. What was Kezia's father's routine? केजिया के फादर का रूटीन क्या था बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस जाने से पहले एज वी ऑलरेडी लर्न दैट शी यूजुअली came to Kezia's room and gave her a goodbye kiss. The same answer here also, like before going to office, Kezia's father would come to Kezia's room. Kezia के father Kezia के room में आए and give her a goodbye kiss और उसको goodbye kiss दी. Before going to his ऑफिस जाने से पहले आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस अब ऑफिस से आने के बाद आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस he would order his tea to be brought to the drawing room and would ask his mother to get this paper and slippers. He would then order Kezia to take off the boots. अब क्या होता था अब वो घर आता था तो वो आते ही चाय के लिए बोलता था कि ड्राइंग रूम में उसकी चाय ले आओ एंड उसकी मदर को कहा जाता था कि वो कुछ पेपर्स न्यूज़पेपर ले आए या जो स्लिपर्स हैं या जो उसका सामान है ऑफिस का वो ले जाए. देन केजिया को ऑर्डर दिया जाता था कि वो आए और अपने पापा के शूज जो है वो उतारे. सो ऑन संडेज संडे को क्या रूटीन होता था ऑन संडेज ही वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा with his handkerchief on his face, his feet on the vest of the best cushions, and sleep and more. संडे को वो क्या करता था सोफे पर पसर कर लेट जाता था हैंकरचीफ रुमाल को अपने फेस से ढक लेता था हिज फिट और उसके जो पैर होते थे वो कुशन के ऊपर रखे होते थे एंड ही स्लीप एंड स्नो वो सोता था खराटे मारते हुए सो दैट वाज हर फादर्स रूटीन सो बिफोर गोइंग टू ऑफिस शी केम to Kezia's room and gave her a casual kiss. After coming back, she always loudly spoke in his sound and would order his tea to be brought to the drawing room and ask his mother to get his paper. Okay. Then Kezia was also ordered to take off his boots. And on Sunday, he usually sleep and snore. Question number 4. In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? Now, Kezia's grandmother always encouraged her to spend some time with her family, to spend some time with his father. So, what ways did Kezia's grandmother encourage her? Kezia's grandmother would encourage her to know her father better by asking her to go down to the drawing room. Always Kezia's grandmother encourage her to know her father better कि वो बैठे पापा के साथ बातचीत करे ताकि वो अपने पापा को बहुत अच्छे से जान पाए और वो कहती थी उसको कि जाए जैसे सपोज there was a day of Sunday then by she was asking her to go down to the drawing room and have a nice talk with her father. She need to share her heartfelt feelings, what she actually felt. So she also asked Kezia to stitch a pen cushion out of a beautiful silk yellow piece. Her grandmother suggested her that she had to stitch a pin cushion out of a beautiful yellow silk piece
and give it to her father as a birthday present, because next week her father's birthday was there. Okay, and her grandmother suggested her that she should plan something. So that's why she always encouraged her to get to know her father in a better way. Now, next question. Kezia's efforts to please her father insulted and displeasing him very much. केजिया जो कोशिश कर रही थी अपने फादर को खुश करने की, उसका रिजल्ट हुआ कि उसके पापा उससे और गुस्सा हो गए. सो हाउ डिड दिस हैपन? सो वी नो द आंसर दैट केजिया ने तो जो सजेस्ट उसके ग्रैंड मदर से उसको मिला था दैट शी शुड स्टिच पिन कुशन फॉर हिज फादर फॉर हर फादर्स बर्थडे प्रेजेंट. But what had happened actually that Kezia stitched three sides of the pincushion. तीन साइड सिल दी. Now she was confused at what to fill the cushion with. अब वो कंफ्यूज थी कि कुशन को सीले कैसे. Grandmother was not around. दादी आसपास नहीं थी. So Kezia went to her parents' room to ask her mother to come scrap. वो रूम में गई अपनी मम्मा से कुछ पूछने के लिए, कुछ स्क्रैप्स, कोई मतलब वेस्ट, कोई कपड़ा या कोई वेस्ट पेपर है या नहीं है. बट हर मदर वॉज नॉट देयर इन द रूम. अब उसकी मम्मा भी कमरे में नहीं थी. सो केजिया देन सॉ सम शीट्स ऑफ पेपर्स ऑन द बेड टेबल. अब केजिया ने कुछ शीट्स देखी जो बेड के टेबल पर रखी हुई थी. शी कलेक्टेड देम. उसने उनको कलेक्ट किया. tore them, फाड़ दिया into small pieces, छोटे छोटे pieces में फाड़ दिया, and stuffed the cushion with those pieces. और भर दिया कुशन को उन पेपर से. Her efforts to please her father resulted in displeasing him very much. उसके जो efforts थे अपने पापा को खुश करने के, वो क्या हो गए, अब नाखुशी में बदल गए. When at night her father searched for those sheets of paper on the bed table, जब उसके फादर उस दिन ढूंढ रहे थे बेड पे उन शीट्स को, द शीट्स ऑफ पेपर हैड द स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. वो पोर्ट अथॉरिटी की एक स्पीच थी. एंड हर फादर व्हेन ही गॉट टू नो, देन हर फादर स्कोल्डेड एंड बीट हर विद अ रूलर फॉर टचिंग थिंग्स दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर. उन चीजों को हाथ लगाने के लिए उसको मारा गया जो चीज उससे रिलेटेड ही नहीं थी. उसने क्यों टच किया उन चीजों को. सो दैट्स व्हाई her efforts to please him convert into displeasing him. Next question. Kezia decides that there are different kinds of fathers. So what kind of father was Mr. McDonald? उसने बोला कि in the world there are different kinds of father. So her father was very cruel according to the personality of Kezia. But what kind of father was Mr. McDonald? Kezia decides that there are different kinds of father. उसने डिसाइड किया कि इस संसार में बहुत ही तरह के फादर हैं. मिस्टर मैकडोनाल्ड वॉज अ लविंग फादर. वो बहुत ही प्यारे फादर है. एंड ही वॉज वेरी जेंटल एंड फॉरगिविंग. कि बहुत विनम्र हैं और हमेशा मतलब माफ कर देने वाला नेचर में से हैं. ही यूज टू प्ले एंड लाफ विद हिज चिल्ड्रन. वो हमेशा क्या करते हैं, बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ हंसते बोलते हैं. एंड ही वॉज रियली फ्रेंडली विद देम. और बच्चे भी अपने फादर के साथ बहुत ही क्या है, फ्रेंडली हैं. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्टली, सो ही वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम केजियाज फादर. अब वो तो जो थे ना, वो केजिया के फादर से तो बिल्कुल क्या थे, डिफरेंट थे.
बिल्कुल डिफरेंट थे उसने। सो वन डे व्हेन हर मदर एंड ग्रैंडमदर वर एट द हॉस्पिटल, एक दिन जब उसकी मम्मा और उसकी ग्रैंडमदर हॉस्पिटल गए हुए थे। अब नाउ हाउ डज केजिया बिगिन टू सी हर फादर, अब उसने कैसे अपने फादर को बिल्कुल अच्छे नेचर वाला समझा कि नहीं उनका कोई फॉल्ट नहीं है, वो हमेशा एक अच्छी पर्सनालिटी है, वो मतलब केयरिंग है उसके लिए। सो व्हेन शी फेल्ट, उसने महसूस ऐसा कब किया? सो हियर वी डू हैव द आंसर दैट केजिया वाज लेफ्ट एट होम विद एलिस, वो एलिस के साथ घर पे बिल्कुल अकेली थी। एट नाइट, रात को शी हैड अ नाइटमेयर, उसको एक सपना आया। एंड नाउ शी वाज शिवरिंग विद फियर, बहुत डर रही थी। शी कॉल्ड फॉर हर ग्रैंडमदर बट सॉ हर फादर नियर हर बेड, वो अपनी दादी को बुला रही थी बट उसने देखा कि उसके जो पापा है ना, वो उसके पास ही है, उसके बिल्कुल पास ही जो थे वो लेटे हुए थे। उसके पापा उसके साथ खड़े थे, तो ये देखकर उसको थोड़ा सा फील हुआ ऑकवर्ड सा, बट स्टिल she was very afraid. So, but saw her father near the bed. He took her in his arm. उसके फादर ने उसको अपनी बाजू में उठाया and carefully tucked her on his bed. और उसको बहुत ही आराम से अपने बेड के ऊपर ले गए। So he then lay down beside her. वो उसके साथ जो थे वो लेट गए and half asleep, और वो लगभग सो गए। She went closer to him. वो उनके बिल्कुल पास थी। Snuggled her head under his arm and held on to his shirt tightly. उसने क्या किया हुआ था? अपने सिर को उनके दिल के बिल्कुल पास रखा हुआ था एंड उन्होंने उसने अपने फादर की शर्ट को बहुत लाइटली जो है वो पकड़ रखा था। बट शी सॉ हर फादर गो ऑफ टू स्लीप बिफोर हर, लेकिन जैसे उसने देखा कि उसके पापा तो उससे पहले ही सो गए हैं, so she understood that he had to work so hard every day, which made him too tired to behave like Mr. McDonald. फिर उसको समझ में आया कि वाकई में उसके जो फादर है ना, वो सच में बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। She told his father that he had a big heart. उसने अपने फादर को बोला, अपने मन में अपने फादर को बोला कि रियली उनका जो दिल है ना, वो बहुत बड़ा है। So that's why her behavior, her think was completely changed. So now we do have there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter. अब वो कह रहे हैं कि ये बहुत ही रिलैक्सेशन की एक बहुत ही गहरी सांस ली उसने। कब ली? जब उसको पता चला कि जब उसको पता चलता है ना कि उसके फादर जो हैं वो उससे मतलब ठीक है वहां से दूर जा रहे हैं, तो वो बहुत ही अच्छा सा फील होता है उसको। शी फेल्ट वेरी हैप्पी, बहुत खुश होती है उस टाइम पे। सो हेयर ग्लैड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग, किसी चीज के लिए खुश होती है। यहाँ पर उसका मतलब है किसी चीज के लिए खुश होना। सो ग्लैड, हैप्पी, प्लीज, डिलाइटेड, थ्रिल्ड, ओवरजॉयड आर सिनोनिम्स। ये सब सिनोनिम्स हैं उसी चीज के, ग्लैड के। हाउएवर दे एक्सप्रेस हैप्पीनेस इन सर्टेन वेज, से आप किसी भी तरह से अपनी खुशी को दर्शा रहे हो। सो रीड सम सेंटेंसेस लाइक शी वाज ग्लैड व्हेन द मीटिंग वाज ओवर, वो बहुत खुश थी जब मीटिंग ओवर हुई। द चीफ गेस्ट वाज प्लीज्ड टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर, चीफ गेस्ट को बहुत प्रसन्नता महसूस हुई जब उन्होंने नेम अनाउंस किया।